बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। Nitrogen containing compounds. A large variety of plants' secondary metabolites have nitrogen in their structure. This category includes alkaloids, cyanogenic glycosides, glycosinolates, and non-protein amino acids. These are of considerable interest due to anti-herbivore toxicity to human and medicinal properties. Most nitrogenous secondary metabolites are synthesized from common amino acids. So, जो थोड़ी सी इस स्लाइड में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में। प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इनमें काफी तादाद जो है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में alkaloids, cyanogenic glycosides, glycosinolates और नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड होते हैं। और ये नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड जो है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हर्बीवोर के खिलाफ है, इनमें टॉक्सिसिटी होती है ह्यूमन के लिए और इनकी मेडिसिनल यूजेस के लिए। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है ये मोस्टली अमीनो एसिड से बनते हैं। अल्कलाइड्स नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड है, जैसे कि हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे। Alkaloids have dramatic physiological effects on animals. The alkaloids are a large family of more than 15,000 nitrogen-containing secondary metabolites found in approximately 20% of species of vascular plants. अल्कलाइड जो है ये एक बहुत बड़ी फैमिली है नाइट्रोजनस कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, और इसमें तकरीबन 15,000 से ज़्यादा जो है मेटाबोलाइट्स हैं और 20% जो है टोटल वेस्कुलर प्लांट्स, उनका 20% जो है उनमें अल्कलाइड्स पाए जाते हैं। The nitrogen atom in these substances is usually part of a heterocyclic ring, a ring that contains both nitrogen and carbon atoms. So, as a group, alkaloids are best known for their striking pharmacological effects on vertebrate animals. अल्कलाइड्स जो है अपने एनिमल्स के ऊपर मेडिसिनल इफेक्ट्स की वजह से जाने जाते हैं। As the name of alkaloid would suggest, most alkaloids are alkaline. जो मोस्टली alkaloids हैं वो alkaline in nature है। At pH values commonly found in cytosol, pH level 7.2 are the vacuole pH 5 to 6. The nitrogen atom is protonated. Hence, alkaloids are positively charged and are generally water soluble. अल्कलाइड जो होते हैं ये इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये मोस्टली जो है वाटर सॉल्युबल होते हैं। Alkaloids are usually synthesized from one of a few common amino acids, in particular lysine, tyrosine and tryptophan. अल्कलाइड जो है वो यूजली स्पेसिफिक अमीनो एसिड से बनते हैं जिनमें लाइसिन, tyrosine और tryptophan है। However, the carbon skeleton of some alkaloids contain a component derived from the terpene pathway. Several different types, including nicotine and its relatives, are derived from ornithine and intermediate in arginine biosynthesis.
The B vitamin, nicotinic acid, niacin, is a precursor of the pyridine six-membered ring of this alkaloid. The pyrrolizidine five-membered ring of nicotine arises from ornithine. Nicotinic acid is also a constituent of NAD+ and NADP+, which serves as electron carriers in metabolism. Predators. So अल्कलाइड्स का जो रोल है इसके ऊपर पिछले 100 साल से डिफरेंट जो है मफरूजे हैं. ये भी सोचा जाता था कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, जस्ट लाइक जैसे कि यूरिया यूरिक एसिड एनिमल्स में है. फिर सोचा कि ये नाइट्रोजनस स्टोरेज कंपाउंड है या ग्रोथ रेगुलेटर है. लेकिन इन सब का जो था वो इतना ज्यादा कोई एविडेंस या प्रूफ नहीं था. Large numbers of livestock deaths are caused by the ingestion of alkaloid-containing plants. In the United States, a significant percentage of all grazing livestock animals are poisoned each year by consumption of large quantities of alkaloids-containing plants such as lupines, larkspur, delphinium, and ground shell सिनेसियो. एक बहुत बड़ी तादाद जो है लाइव स्टॉक की जानवरों की उनकी डेथ हो जाती है अल्कलाइड कंटेनिंग प्लांट्स खाने की वजह से. सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में एक बहुत बड़ी परसेंटेज जो है ग्रेजिंग लाइव स्टॉक्स की वो हर साल अल्कलाइड्स कंटेनिंग जो प्लांट्स हैं उनके खाने की वजह से जहर खुरानी का शिकार होते हैं. This phenomena may be due to the fact that domestic animals, unlike wild animals, have not been subjected to natural selection for the avoidance of toxic plants. इस फिनोमेना की वजह ये भी हो सकती है कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो ग्रेजिंग एनिमल्स की तरह फील्ड में इस तरह के जो अल्कलाइड्स कंटेनिंग जो है चारा या प्लांट्स नहीं खाते, इस वजह से उनमें इम्यूनिटी कम होती है और वो आसानी से इनमें इन कंपाउंड्स की वजह से पॉइजनस का शिकार हो जाते हैं. Nearly all alkaloids are also toxic to humans when taken in sufficient quantity. For example, strychnine, atropine, and coniine from poison hemlock are classic alkaloid poisoning agents. और जानवरों की तरह जो है अल्कलॉइड्स जो है अगर वो ज्यादा मिकदार में ली जाए तो वो इंसानियत या इंसानों के लिए भी जहरीले होते हैं. At lower doses, however, many are useful pharmacologically. लेकिन अगर इनकी डोजेज कम हो, हम ज्यादा मिकदार में न लें तो काफी सारे जो है वो मेडिसिनल इफेक्ट रखते हैं. मॉर्फिन, कोडीन एंड scopolamine are just a few of the plant alkaloid currently used in medicine. ये मॉर्फिन और कोडीन हम अक्सर सुनते हैं. ये भी अल्कलॉइड्स हैं और इनका मेडिसिन फॉर्मेशन में रोल है, मेडिसिन की फॉर्मुलेशन में. Other alkaloids including cocaine, nicotine and caffeine enjoy widespread और कुछ अल्कलाइड जैसे कोकीन है, निकोटीन है या कैफीन है, ये भी काफी फेमस जो है अल्कलाइड्स. On cellular level, the mode of action of alkaloids in animals is quite variable.
अगर हम सेलुलर लेवल पे देखें तो अल्कलाइड्स का जो मोड ऑफ एक्शन है एनिमल्स में वो वेरिएबल है, इसमें वेरिएशंस है। मैनी अल्कलाइड्स इंटरफेयर with components of the nervous system, especially the chemical transmitters। काफी सारे अल्कलाइड्स जो हैं जो नर्वस सिस्टम के साथ इंटरफेयर करते हैं और इफेक्ट करते हैं केमिकल सिग्नल्स की ट्रांसमिशन को। अदर इफेक्ट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सेंसेस मिसलिनियस एंजाइम एक्टिविटीज। जबकि कुछ अल्कलाइड्स ऐसे हैं कि जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट या प्रोटीन सिंथेसिस या डिफरेंट जो एंजाइम एक्टिविटीज है उन्हें इफेक्ट। सो हियर आर सम मेजर टाइप्स ऑफ अल्कलॉइड्स, their amino acid precursors and well known examples of each type। सो इस स्लाइड में हम अल्कलॉइड्स की जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके अमीनो एसिड प्रिकर्सर्स और जो हमारी कॉमन या डेली लाइफ में जो उनकी वेल नोन एग्जांपल्स हैं उनके बारे में स्लाइड में हम देखेंगे। पायरोलाइडाइन अल्कलाइड क्लास है, एस्पार्टेट अमीनो एसिड प्रिकर्सर है एंड इट्स एग्जांपल इज निकोटाइन। तो इसकी जो एग्जांपल है वो निकोटाइन है और यूजेस में स्टिमुलेंट, डिप्रेसेंट, ट्रैंकुलाइजर के तौर पे ये यूज होता है। निकोटाइन आपने सुना होगा। द सेकंड क्लास इज ट्रोपाइन। इसका जो बायोसिंथेसिस प्रिकर्सर है ऑर्निथाइन। इसकी एग्जांपल जो है कोकेन, एट्रोपाइन। ये इसकी दो फेमस एग्जांपल्स हैं। इनका रोल क्या है? atropine जो है प्रिवेंशन ऑफ इंटेस्टिनल स्पेस, एंटीडोट टू अदर पॉइजन्स, डायलेशन ऑफ पिपल्स फॉर एग्जामिनेशन। एट्रोपाइन जो है इसके जो ये सब कुछ यूजेस हैं तो मोस्ट ऑफ टाइम ये जो है एंटीडोट के तौर पे यूज होता है डिफरेंट पॉइजन्स के लिए। एंड सेकंड जो इसकी थी ट्रोपाइन क्लास के एग्जांपल वो थी कोकेन। सो जैसे सब जानते हैं कोकेन जो है इसका फंक्शन है स्टिमुलेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बेसिकली अपना फंक्शन परफॉर्म स्टिमुलेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। नेक्स्ट क्लास जो है ये है पिपरिडाइन। अमीनो एसिड प्रिकर्सर इसमें जो है लाइसिन और एसीटेट। coniine इसकी जो एग्जांपल है यूज क्या है, ये पॉइजन है और फंक्शंस क्या करता है, ये पैरालाइज कर देता है मोटर न्यूरॉन्स को। नेक्स्ट क्लास है पायरोलिजाइडाइन। इसका बायोसिंथेटिक जो प्रिकर्सर है वो ऑर्निथाइन और इसकी एग्जांपल जो है रेट्रोसाइन। और इसका ह्यूमन यूज है सच अभी नहीं पता। नेक्स्ट अल्कलाइड्स की जो क्लास है वो है क्विनोलिजाइडाइन। इसका बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर भी पिपरिडाइन की तरह लाइसिन ही है। इसकी एग्जांपल जो है लुपिनीन और इसका जो फंक्शन है रेस्टोरेशन ऑफ हार्ट रिदम। ये अपना रोल परफॉर्म करता है हार्ट रिदम को मेंटेन करने में, रिस्टोर करने में। नेक्स्ट क्लास जो है आइसोक्यूनोलाइन। इसका अमीनो एसिड प्रिकर्सर जो है वो है टायरोसाइन। उसकी एग्जांपल जो है वो है कोडीन, मॉर्फिन और इनके जो फंक्शंस हैं ये एनाल्जेसिक, यूजुअली पेन रिलीफ में या ट्रीटमेंट ऑफ कफ में भी यूज करवाते हैं।
जो लास्ट क्लास है वो है इंडोल। इसका जो बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर है वो है ट्रिप्टोफैन। एग्जाम्पल जो है सिलोसिबिन, रेसरपाइन, स्ट्रिचीन, जिसमें डिफरेंट इनके जो फंक्शन है, यूजली ये जो ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस, यूजली ये हाइपरटेंशन में यूज करवाए जाते हैं, और रैट पोजीशन या आई डिसऑर्डर में भी ये यूज। इन दिस स्लाइड we will discuss some representative alkaloids. Examples of alkaloids are diverse group of secondary metabolites that contain nitrogen, usually as part of a heterocyclic ring. So इस स्लाइड में हम कुछ जो है फेमस एग्जांपल्स जो हैं अल्कलाइड्स की उनके बारे में बात करेंगे, जैसा कि कोकीन, निकोटीन, मॉर्फिन और कैफीन। Caffeine is a purine type alkaloid similar to nucleic acid bases adenine and guanine. The pyrrolizidine five-membered ring of nicotine arises from ornithine. The pyridine six-membered ring is derived from nicotinic acid. Now we will discuss how nicotine biosynthesis begins. Nicotine biosynthesis begins with the biosynthesis of the nicotinic acid from aspartate and glyceraldehyde 3-phosphate. Nicotinic acid is also a component of NAD plus and NADP plus, important participant in biological oxidation reduction reactions. The five-membered ring of nicotine is derived from ornithine and intermediate in arginine biosynthesis. One group of alkaloids, the pyrrolizidine alkaloids, illustrates how herbivores can become adapted to tolerate plant defensive substances and even use them in their own defense. Within plants, pyrrolizidine alkaloids occur naturally as non-toxic nitrogen oxides. In herbivore digestive tracts, however, they are quickly reduced to uncharged hydrophobic tertiary alkaloids which easily pass through membranes and are toxic. Nevertheless, some herbivores such as cinnabar moth have developed the ability to reconvert tertiary pyrrolizidine alkaloids to the non-toxic nitrogen oxide from immediately after its absorption from the digestive tract. So कुछ herbivores जो हैं जिनमें cinnabar moth की एग्जाम्पल दी गई है, उन्होंने अपने अंदर एक एबिलिटी डेवलप कर ली कि टर्शरी जो अल्कलाइड्स हैं उनको वो नॉन टॉक्सिक ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं इमीडिएटली आफ्टर absorption from digestion. These herbivores may then store the nitrogen oxides in their bodies as defense against their own predators. Two forms of pyrrolizidine alkaloids occur in nature: the nitrogen oxide form and the tertiary alkaloids. Pyrrolizidine जो अल्कलाइड्स हैं ये नेचर में दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म है, दूसरी टर्शियरी अल्कलाइड. The non-toxic nitrogen oxide found in plants is reduced to the toxic tertiary form in the digestive tracts of most herbivores. However, some adapted herbivores can convert the toxic
tertiary alkaloid back to non-toxic nitrogen oxide. These forms are illustrated here for the alkaloids cynine found in species of redwood. कुछ जो है herbivores वो जब नॉन टॉक्सिक नाइट्रोजन ऑक्साइड खाते हैं तो वो इसे प्लांट सोर्स से जब वो लेते हैं तो वो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में ये टॉक्सिक टर्शरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो हर्बीवोर्स इस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट कर जाते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं, उनमें ये एबिलिटी, उनमें ये मेटाबॉलिज्म में ये हो जाता है कि वो टर्शरी ये टॉक्सिक टर्शरी एल्कलॉइड को वापस जो है नॉन टॉक्सिक नाइट्रोजन ऑक्साइड में उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। Not all the alkaloids that appear in plants are produced by the plant itself. Many grasses harbor endogenous fungal symbionts that grow in the apophytes and synthesize a variety of different types of alkaloids. इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि काफी प्लांट्स जो है वो खुद ब खुद जो है अल्कलाइड्स प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि उनमें फंगस और प्लांट का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जनरेट हो जाता है और उसके रिजल्ट्स में जो है डिफरेंट टाइप्स के जो अल्कलाइड वो प्लांट्स में प्रोड्यूस हो जाते हैं। ग्रासेस with fungal symbionts often grow faster and are better defended against insects and mammalian herbivores than those without symbionts. और इस तरह के जो ग्रासेस हैं या ग्रॉस फैमिली के प्लांट्स हैं जो कि फंगस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिनमें डेवलप हो जाता है, तो उनका जो डिफेंस सिस्टम है इंसेक्ट्स और हर्बीवोर के अगेंस्ट, वो जिन प्लांट्स में ये नहीं होता सिस्टम उनके इस वक्त बहुत ज्यादा अच्छा होता है। Unfortunately, certain grasses with symbionts such as tall fescue or important pasture grasses that may become toxic to livestock when their alkaloid content is too high. Efforts are underway to breed tall fescue with alkaloid levels that are not poisonous to livestock but still provide protection against insects. ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ग्रास और फंगस के दरमियान हो रहा है, उनके नतीजे में हाई क्वालिटी जो अल्कलाइड्स की प्रोड्यूस हो रही है वो लाइफ स्टॉक के लिए टॉक्सिक हो जाती है। तो इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि इस तरह के टाल फिस्क्यू ये जो प्लांट है ग्रास है वो ब्रीड की जाए, इस तरह की इसकी वैरायटी लेके आई जाए कि जो इतनी ज्यादा पॉइजन न हो लेकिन इंसेक्ट्स के अगेंस्ट उसमें रेजिस्टेंस, like monotropines in conifer resin and many other anti-herbivore defense compounds. Alkaloids increase in response to initial herbivore damage, fortifying the plant against subsequent attack. तो ये एविडेंसेस हैं कि जैसा कि कॉनिफर ट्री में मोनोट्रोपीन्स है, ये अल्कलाइड्स की एक टाइप है, तो फर्स्ट हर्बीवोर अटैक के बाद इनमें अल्कलाइड्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है प्लांट्स में ताकि वो अपना जो है डिफेंस कर सकें हर्बीवोर के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल निकोटियाना एटेन्यूटा, a white tobacco that grows in deserts of Great Basin, produces higher levels of nicotine following herbivory. तो एक वाइल्ड टोबैको है, इसकी एग्जांपल दी गई जो कि डेजर्ट्स में ग्रो होता है। तो उसमें जब एक मरतबा जो है लाइफ स्टॉक जो है या हर्बीवोर जो है जब उस पर अटैक करते हैं तो रिजल्ट के तौर पे उस पर जो है निकोटीन की जो अमाउंट है वो ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है ताकि वो हर्बीवोर्स को स्टॉप कर सके। When it is attacked by nicotine tolerant caterpillars, however, there is no increase in nicotine. Instead,
volatile terpenes are released that attract enemies of caterpillars. Clearly, while tobacco and other plants must have ways of determining what type of herbivore is damaging their foliage. So एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि वाइल टोबैको की हम बात कर रहे थे कि जब उस पर कोई भी हर्बीवोर अटैक करता है फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद उसमें जो निकोटीन की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है ताकि जो नेक्स्ट हर्बीवोर का अटैक ना हो। लेकिन वही जो वाइल्ड टोबैको है, जब वो डिफरेंट कैटरपिलर्स जिनमें निकोटीन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होती है, टॉलरेंस होती है, वो अटैक करते हैं, तो वाइल्ड टोबैको जो कल हम डिस्कस कर रहे थे उसमें निकोटीन की जो अमाउंट है वो या प्रोडक्शन है वो इंक्रीज नहीं होती, बल्कि वो जो वाइल्ड टोबैको है वो कुछ वोलेटाइल टर्पीन्स रिलीज करता है, और जिनका काम ये होता है कि वो कैटरपिलर्स के एनिमीज को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। वो फिर जो कैटरपिलर के एनिमीज हैं वो कैटरपिलर्स के साथ फाइट करेंगे, कैटरपिलर्स को डैमेज करेंगे या खत्म कर देंगे, और वो प्लांट जो है वाइल्ड टोबैको का वो अटैक से बच जाएंगे। डिफरेंट जो है मैकेनिज्म्स हैं प्लांट्स में अल्लाह ताला ने रखे उनके डिफेंस के लिए। Herbivores might signal their presence by the type of damage they inflict or the distinctive chemical compounds they release। और प्लांट्स में ये एबिलिटी है कि वो असेस कर सकते हैं कि किस टाइप का उनके ऊपर अटैक है, कोई कैटरपिलर अटैक कर रहा है या किसी हर्बीवोर्स का अटैक है, तो वो ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनमें ये सलाहियत होती है। Herbivores might signal their presence by the type of damage they inflict or the distinctive chemical compounds they release। और प्लांट जो है वो हर्बीवोर्स या कैटरपिलर की जो है प्रेजेंस किस तरह असेस करता है कि ये डिफरेंट जो है सिग्नल्स ट्रांसमिट हो रहे होते हैं या फिर केमिकल कंपाउंड जो है वो हर्बीवोर या कैटरपिलर रिलीज कर रहे होते हैं, तो उनसे प्लांट आइडेंटिफाई करता है कि ये जो अटैक है ये हर्बीवोर का है या कैटरपिलर है या किस टाइप का ये अटैक है। रिसेंटली द ओरल सेक्रेशन ऑफ कैटरपिलर feeding on corn leaves were shown to contain a fatty acid amino acid conjugate that induce the plant to produce defensive terpenes when applied to cut leaf. So this was all about our today's lecture about alkaloids. So we studied what are alkaloids, their role, their classification, and their functioning, how they perform their function. So in this scenario of epidemic, please stay home, stay safe. Thank you so much for your attention.